एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। प्रधानमन्त्रिणः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्य मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणायां संयुक्त राष्ट्रसंघस्य महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस अस्यैव कार्तिकस्य द्वादशे दिवसे नेपालस्य औपचारिक भ्रमणाय आगन्ता। महासचिवस्य गुटेरेस इत्यस्य कार्तिकस्य द्वादश दिवसे दिवा काष्ठमण्डपम् आगमनस्य कार्तिकस्य पञ्चदशे दिवसे प्रातः प्रस्थानस्य च कार्यक्रमो वर्तते। इतः पूर्वं महासचिवस्य गुटेरेस इत्यस्य नेपाल भ्रमणं निर्धारितं सदपि इजरायल देशस्य प्यालेस्टिनी हमास समूहस्य च मध्ये भूतस्य आक्रमणस्य कारणेन निरस्तीकृतम् आसीत्। नेपाल भ्रमणस्य क्रमे महासचिवस्य गुटेरेस इत्यस्य नेपालस्य शान्ति प्रक्रियायाः जलवायु परिवर्तनस्य नेपाली शान्ति सेनायाश्च विषयेषु उच्चस्तरेषु विमर्शनस्य कार्यक्रमो वर्तते। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा कथयति पर्वोत्सवानां समये आपणे अभावानाम् उपभोग्य वस्तूनां सहजापूर्ति तत्कालं विधीयते। मन्त्री परिषद उपवेशस्य निर्णयान् सार्वजनिक कर्तुं पूर्वेद्यु आयोजिते पत्रकार सम्मेलने सर्वकारस्य प्रवक्ता च मन्त्री शर्मा आपणे दृष्टस्य उपभोग्य वस्तूनां अभावस्य विषये संचारकर्मिणां जिज्ञासुं समाधान अभासत नियमितानुगमनस्य पर्वोत्सवानां समये शर्करा प्रभृतीनां उपभोग्य वस्तूनां तत्कालं आपूर्तिर्व्यवस्थापनस्य च कार्यं विधीयमानं वर्तते। मन्त्री शर्मा अवोचत् पर्वोत्सवानां समये सम्भाव्य दुर्घटना आपराधिक घटना चौर्यम् अवलुण्ठनं चेति कार्याणि दृष्टिगतानि विधाय सुरक्षा व्यवस्था सबलीकृता वर्तते। गतदिने उपविष्टेन मन्त्री परिषद उपवेशेन अधस्तना ऋण जलविद्युत परियोजनाय आवश्यक भूमि प्राप्त्यर्थं स्वीकृतिं दातुं संयुक्त राष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य एन्टोनियो गुटेरेस इत्यस्य अस्यैव कार्तिकस्य द्वादश दिवसात् पञ्चदश दिवसं यावत् सम्पाद्यमानं नेपाल भ्रमण कार्यक्रमं स्वीकर्तुं च निर्णीतमस्ति। एवमेव मनाङ वायुसेवाया हेलिकप्टर यानस्य दुर्घटनानुसन्धान समिति कार्यदेशं दातुं रेलयानसेवाया सञ्चालन सम्भारयो कृते प्रशिक्षण प्राप्ताय जनशक्ते आवश्यकानां उपकरणानां सामग्रीणां च सर्वकार प्रक्रिया क्रयण संविधाय सम्पादनाय सैद्धान्ते स्वीकृतिं दातुं च मन्त्री परिषद उपवेशेन निर्णीतं वर्तते। मन्त्री परिषद उपवेशे प्रधानमन्त्रिणा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डेन चीन भ्रमणे विद्यमानस्य उप प्रधानमन्त्रिणा नारायण काजी श्रेष्ठस्य स्वास्थ्यावस्था विषय ज्ञापितमिति संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा अवदत्। उप प्रधानमन्त्रिणा श्रेष्ठस्य बेजिङ वर्तिनी पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज नामधेय चिकित्सा शिक्षणालय उपचार जायमानो वर्तते। एतस्य स्वास्थ्यावस्था संकटमुक्ता च अस्ति मन्त्री शर्मा असूचयत्। सभामुख देवराज घिमिरे संघीय संसद गतिविधिन् प्रभावकारिण विधातुं संसद सक्रिय क्रियाशीलतां नागरिकाणां समक्षं प्रापयितुं च संचार जगत् अनुरुणद्धि। विजयादशम्यादि पर्वोत्सवानाम् अवसरे ह्यः काष्ठमण्डपे सम्पादकै सह विहितायां अन्तर्क्रियां सभामुख घिमिरे देशस्य सामाजिकै राजनीतिकै च परिवर्तने संचारक क्षेत्रेण महत् योगदानं प्रापितमिति अस्मरत्। सभामुख घिमिरे संसद सांसदानां च गतिविधिन् सूक्ष्मतया निरीक्ष्य न्यूनता दुर्बलते सुधारयितुं नैरन्तरेण जनतां प्रति उत्तरदायिनो विधातुं च संचार क्षेत्रेण संसदे परामृष्टव्यमिति बलं प्रादात्। तदवसरे संचारकर्मिणः संसदं प्रभावकारिणीं विधातुं सभामुखेन आवश्यकता अनुसारेण निर्देशनं विधेयं विधेयके विज्ञेभ्यः परामर्शनं गृहीत्वा परिष्कृतं विधातुं भूमिका निर्वोढव्या चेति ध्यानाकर्षणं व्यदधो। नेपाल सर्वकारेण गाजा पट्टी क्षेत्रे सर्वसाधारणेषु जनेषु विहितम् आक्रमणं प्रति गभीरं ध्यानाकर्षणं सम्भूतम् अस्ति ज्ञापितं वर्तते। परराष्ट्र मन्त्रालयेन यो विज्ञप्तिं प्रकाश्य गत मंगलवासरे गाजा पट्टी क्षेत्रे एकस्मिन् चिकित्सालये निर्दोष नागरिकाणां हननत्वेन जातस्य आक्रमणस्य घटनया सर्वकार स्तब्धीभूत स्थिति उक्तं वर्तते। गाजा पट्टी क्षेत्रस्य चिकित्सालये निर्दोष जनानां हत्याया घटनया नेपाल सर्वकार स्तब्धीभूतोऽस्ति। चिकित्सालय स्वास्थ्यकर्मीषु रुग्णेषु साधारणजनेषु च विहितम् आक्रमणं निन्द्यते। सहैव घटनया शोक सन्तप्त परिवारजनेषु हार्दिं संवेदना अभिव्यज्य आहतानां जनानां शीघ्रं स्वास्थ्यलाभश्च प्रकाम्यते इति परराष्ट्र मन्त्रालयेन प्रकाशितं विज्ञप्तौ उल्लिखितं वर्तते। नेपालः शान्तो विश्वसीति उल्लिख्य सृष्टं विवादं शान्तिपूर्णरूपेण वार्तया च समाधातुं विज्ञप्तौ अनुरुद्धं वर्तते। नवरात्रस्य षष्ठी दिवसे अद्य शक्ति स्वरूपाय कात्यायनी देव्या पूजाराधने विधीयमाने स्तः। पौराणिक कथनस्य अनुसारेण कात्यायनर्षि अद्य शक्ति जगदम्बाया
आद्य शक्ति जगदम्बया पुत्रा रूपेण प्राप्ते अभिलाषेण कठोरेण तपः तेपे शैव आद्या शक्ति देवतानां कार्यसिद्धये महर्षि कात्यायनी शास्त्रमे कन्या रूपेण प्रारभूता ततः कात्यायनी नाम्ना विख्याता अभवत्। परम्पराय अनुसारेण घट स्थापन स्थले अद्य षोडशोपचारे सविधि कात्यायनी देवीं आवाह्य पूजाराधने विधीयते। भगवता कात्यायन पूजाराधन सन्तोषणै रोग शोक भय दुःख दारिद्र्य सदृश संकटा विनश्यन्ति सुखम शान्ति ऐश्वर्यं च प्राप्यन्ते इति धार्मिक विश्वासो वर्तते। कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषाल भाषते समग्र कृष्यानुसन्धानस्य सबलीकरणम् आवश्यकं वर्तते। बाँकी जनपदे गतदिने कृषि मन्त्रालयसन्तर्गतानां संघीय कार्यालयानाम् अनुगमनस्य प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनायाः कृष्यानुसन्धान निर्देशनालय पशु प्रजनन कार्यालयस्य च अवलोकनस्य क्रमे मन्त्री डाक्टर भूषाल अवोचत् कृष्यानुसन्धान निर्देशनालयस्य पुनः संरचना आवश्यकी वर्तते। सर्वकारेण वर्तमानार्थिक वर्षे औपचारिक क्षेत्राणां सर्वेषां श्रमिकाणां सामाजिक सुरक्षा कोषे योजनस्य लक्ष्यं निर्धारितं वर्तते। अधुनावधि औपचारिक क्षेत्राणां आसन्नाष्टदश सहस्राणां 67,077 संस्थानां आसन्न लक्षचतुष्टयं 53 सहस्राणि च श्रमिका वैदेशिक वृत्त्युपार्जनाय गता लक्ष्य 92,000 अपि अधिका श्रमिकाश्च सामाजिक सुरक्षा कोषे आबद्धा सन्तीति सामाजिक सुरक्षा कोषेण ज्ञापितं वर्तते। विजयादशम्या प्रारम्भणेन सहैव काठमाडौँ उपत्यकात बहिर्गन्तुकानां जनानां संख्या वर्धमाना वर्तते। इति समाचारः।